Hello and welcome to Odisha Preps. Welcome to OPSC OCS Prelims 2025 ପାଇଁ जो टेस्ट सीरीज देखुछु आज आमे पॉलिटी रो टेस्ट नंबर 2 को एडी डिस्कशन करिया को जिबा। लास्ट टेस्ट जेमते को कहली दैट वाज वेरी हमर सब्जेक्ट ओरिएंटेड एटी थिला। तो धीरे धीरे टेस्ट सीरीज जेमती एटी प्रोग्रेस हबो आमे एटी गोटे लेवल प्रोग्रेसिवली एटी टिके इनक्रीज करिकि जिबा हला। सेक्शनल टेस्ट मोर ओरिएंटेड हबो तमरो सब्जेक्ट रु सिलेबस भितरु ही आमे ट्राई करिवु। हाउएवर एटा सेकंड नंबर टेस्ट कला नेक्स्ट टेस्ट रु टिके जो बाहर किया जिंस गुड़ा आसुची जोटा यूजुअली हमको कंफ्यूज करूची से जिंस गुड़ा भी ऐड ऑन धीरे धीरे हे जिवो। अब एफएलटी रे प्रॉपर जेमती ओपीएससी लेवल डिफिकल्टीज एका सब आसेटी आर्बिट्री क्वेश्चन बहुत थिबो, रॉन्ग क्वेश्चन कोड थिबो जेदर गोटे क्वेश्चन नहीं तमे फसी जीवो 5 मिनिट 6 मिनिट पळेबो सेही टाइप रो जिंस हमर एफएलटी रे आसिया जाउची ताकि तमे क्वेश्चन देखि कि जो पैनिक मोड एक्टिवेट हे जाय। वंस पैनिक मोड एक्टिवेट हे गले रेशनैलिटी पळाय से जिंसडा जेंते न हो हला। सो टेस्ट तमे देई साथियो टेस्ट नंबर 2 आई होप क्वेश्चन भलो लेवल रो थिबो एटी भलो भी करी थिबो। लेट अस डिस्कस आउ एनालाइज करिया तको। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 हम सामने रे अछि। कंसीडर करो द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके डेडिकेटेडली एग्जीक्यूटिव पचानी लेजिस्लेटिव पावर लॉ मेकिंग रे कोन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रो पावर अछि। एक नंबर स्टेटमेंट ही और शी इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यस और नो? यस। कहीं कि ना हमें जानचु लोकसभा राज्यसभा तापर प्रेसिडेंट रो एसेंट हेले ही कि छोड़ लॉ एठी हबो। तो से गोटे इंटीग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। विदाउट प्रेसिडेंट पार्लियामेंट रो काम एठी अधा एसेंट दरकार। He or she participate in the discussion of the both house. Parliament is आमर कहि परिया प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा राज्यसभा प्लस राज्यसभा, बट प्रेसिडेंट ता निजे कौनसी भी हाउसेस रो से मेंबर नुहे तो सेति से डिस्कशन रे पार्टिसिपेट एटी करे नाही। He or she address the joint session of the both house every year. Yes, प्रति ईयर जॉइंट सेशन जतळे प्रेसिडेंट सेठी एड्रेस करिवो। नुआ लोकसभा जतळे एठी ये हे कि आसीबो इलेक्ट हे कि आसीबो तो से फर्स्ट एड्रेसल सेशन ता से एठी नबो। तो ए सब जिंस तमे पाइबो आर्टिकल 87 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हिची। एग्जैक्ट आर्टिकल मन रखियार किछ नेसेसिटी नाही, बस एटा ठीक ना भूल तमे एठी जानिबार अछि। करेक्ट। He or she can promulgate ordinance under certain circumstances. Yes, president एटी ordinance देई पारिबो under certain circumstances। ए जिंसटा हमर आर्टिकल 100 आउ 23 रे एटी कोच जस्ट अ मिनट आर्टिकल 123 रे ये कोच। सो 1 is correct over here, हमर 3 is correct, 4 is correct। which of the statement are correct इति पचारची ता माने हम देखिया 1 3 आउ 4 ऑप्शन डी is correct over here। डन। ओके रिवाइज करी थी आई गेस ए क्वेश्चन टा हे जिवार थिला इजी क्वेश्चन। देन टिके देखिया फैक्चुअल टाइप रो क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट को कंसीडर करो रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक रे देछि हम जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिकॉर्ड होल्ड करचंती लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ओके काइना से दी थर कंसेक्यूटिवली फुल टर्म एठी रहितले, फुल टर्म एठी से रहितले है। तो दिस इज आवर करेक्ट जिंस 10 वर्ष पूरा। सेकंड होची डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज द फर्स्ट सर्विंग मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं ये होचंती डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट एटी थिले। डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ओनली प्रेसिडेंट जी निज ऑफिस रे थाई कि तांकर एटी डेथ हे जाइतला है। ऑफिस इन द सेंस ये नुहे माने पोजीशन रे थाई कि से माने करंट प्रेसिडेंट ये रे तांको मृत्युटी हे जाइतला। ओके सो डॉक्टर जाकिर हुसैन एटा कोठु पाइबो जे कोनोसी भी स्टैंडर्ड जीके बही जोटा बेसिक वन डे एग्जाम पई भी बेसिकली जो जीके बुक्स थाए तो कवर करती है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट बहुत ही फैक्चुअल जिंस होइगडा। तो इथरे आई होप कि तुमको असुविधा हबो नाही। तापरे 3 रे दोचे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वाज स्वर्न in as the 15th president of India. Yes, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15th president of India आउ केबे हेइथले जुलाई मास रे। फाइन जुलाई मास को वर्ष 2022 एटा भी ध्यान। तो हमरो एटा इनकरेक्ट जिंस एठी एटा करेक्ट जिंस एटा करेक्ट जिंस
कोटा करेक्ट देछि ना तो हमर 1 आउ 3 ओनली इज करेक्ट सो ऑप्शन सी ओके 3 नंबर देखिया इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया बढ़िया क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 1 vote of an elected member is equal of legislative assembly देखो फॉर सपोज ओडिशा रो एमएलए रो वोट इक्वल थिबो एमपी रो एमएलए रो वोट जतिटा भी वोट माने ओडिशा रो जतिटा एमएलए तांकर वोट सब इक्वल वैल्यू रो एठी थिबो एमपी रो जतिटा एमएलए तांकर वोट वैल्यू एठी इक्वल एठी थिबो हला बट ओडिशा रो एमएलए आ एमपी रो एमएलए रो वोट वैल्यू एठी इक्वल नुहे काहे कि ना हमर वैल्यू ऑफ एमपी ए जो एमएलए ऑफ अ स्टेट एठी डिपेंड करछि पॉपुलेशन तांकर पॉपुलेशन केते पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय केतेटा तांकर एमएलए सीट्स हैला तो लेजिस्लेटिव असेंबली सेही पर्टिकुलर स्टेट रो वैल्यू होची एटी इक्वल सो एटा एटी करेक्ट ओके देन सेकंड देछि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड एमपी माने जतिटा एमपीस अछंदी पार्लियामेंट रो एमपीस बट पार्लियामेंट रो एमपीस तो डिफरेंट जगह रो आछन ना कि छत्तीसगढ़ रो आस्तिबो कि असम रो आस्तिबो कि उत्तर प्रदेश रो आस्तिबो तो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन से जिनसडाइटी होची तो एटा होची हमरो रॉन्ग जिनस देयर वर मोर देन 5000 मेंबर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शन ओके टोटल नंबर ऑफ एमएलए 4800 केते एटी थिले टोटल नंबर ऑफ एमपी देखिया होले 700 एटी दीटा हाउस को मिसई की 750 प्लस हला ता माने ऑलरेडी एटा 5000 प्लस एटी हे जाउची क्लियर सो दिस इज द करेक्ट आंसर ता माने 3 नंबर रो ए के और 3 एटी करेक्ट सो सी 1 एंड 3 हमें करेक्ट एटी दबा फाइन नेक्स्ट टाइम देखिए 4 नंबर रे पचाची which of the following type of authority are attributed to the president of India कौन president of India पाके real power और popular ये किछ अछि नाही ता पाके real power किछ नै से just गोटे nominal जिंस गोटे formal जिंस सो एटा नुहे titular माने formal और de jure माने legal head yes that is correct खाली ना को ceremonial political and nominal तो प्रेसिडेंट एटी पॉलिटिकल नुहे मोर ओवर आमे कहि पारिया जे मेजॉरिटी पार्टी से ही एटी प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस एटी करे प्रेसिडेंट रो अलग फॉर्म ऑफ इलेक्शंस अछि हैला नॉमिनल बट पॉलिटिकल नुहे प्राइम मिनिस्टर इज पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और नॉमिनल दिस इज करेक्ट सो क्वेश्चन नंबर 4 रो एटी 2 नंबर टा करेक्ट 4 नंबर टा करेक्ट कोटा एटी करेक्ट हबो हमर 2 और 4 ऑप्शन डी 5 नंबर at least how many days prior notice is required प्रेसिडेंट को इम्पीच करिया पई जदी तमे रेजोल्यूशन आनिया को चाहिबो केते दिन पूर्वरु नोटिस दरकार पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 14 डे पूर्वरु तुमको एटी नोटिस आनिबा दरकार हला रेजोल्यूशन पई द नेक्स्ट क्वेश्चन हो जे हमर क्वेश्चन नंबर 6 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छा वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रे तो वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रे इलेक्टोरल कॉलेज हुए आमे जानचू जो इलेक्टोरल कॉलेज रे कोन थाए दीटा हाउस रो मेंबर्स माने खाली वोट दियंती एई थरे आउ स्टेट लेजिस्लेचर रो किछि एटी काम नाही ओके सो इलेक्टोरल कॉलेज रे एटी ऑल द नॉमिनेटेड मेंबर्स भी रहिबे ता सहित ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स भी रहिबे मन रख इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रो इलेक्शन रे नॉमिनेटेड मेंबर्स माने कास्ट कोइ पारे ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स एटी रहिबे सो इलेक्ट बाय इलेक्टोरल कॉलेज जो थरे मेंबर ऑफ 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हेठी रहिबे हला बोथ नॉमिनेटेड आउ इलेक्टेड आउ एटा भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम रे एठी होय डन क्वेश्चन नंबर 7 which of the following statement regarding the prime minister of India होची एठी करेक्ट प्राइम मिनिस्टर होची एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग यस प्लानिंग कमिशन जोडा पूर्वरु थिला प्राइम मिनिस्टर काम ही तो सेटा ना नीति आयोग रो एठी थिंक टैंक जोटा को हमें कहूँ जी सब पॉलिसी फॉर्मुलेशन से कहूँ तो तार चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यस अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट दिए द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं ए सिस्टमटा एटा इंग्लैंड रे अछि लोअर हाउस रो मेंबर एठी हबाउ दरकार प्राइम मिनिस्टर पई हमर एठी जे कोनोसी हाउस रो हेले भी चलिबो चाहे सेटा लोकसभा हो कि ओबा हमर राज्यसभा हो किछि एठी असुविधा नाही हला इवन इफ एट प्रेजेंट मु कि तमे चाहले प्राइम मिनिस्टर हे जिवो जदी हम पाखरे कॉन्फिडेंस थिबो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोकसभा रे मेजॉरिटी एटी प्रूव कर पालु कि कॉन्फिडेंस नहीं पारलु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट न हेले भी चलिबो लोकसभा रो मेंबर न हेले भी चलिबो राज्यसभा रो मेंबर न हेले भी एठी चलिबो बस खाली कॉन्फिडेंस थिले कि एबी एठी हे जिवो प्राइम मिनिस्टर हला हाउएवर कंडीशन एती जे 6 मास भितरे को ना को गोटे हाउस रो मेंबर एठी हबाउ पड़ियो सो व्हिच मेक्स दिस इनकरेक्ट
Prime Minister preside over the meeting of Council of Ministers. Yes. So which of the following are correct? अच्छा आउ गोटे अछि right. Prime Minister can be removed by President at his discretion. जो माने even उल्टाटा भी हेई पारे कहवा कथा नुहे but you know it. The Prime Minister cannot be removed by the President. Prime Minister जो जाके confidence of the Lok Sabha से enjoy करूचंती floor test रे कि majority से enjoy करूचंती से removable नुहे. हाँ full term जाके. ओके सो आम देखा 1 2 4 हूँ आमर करेक्ट तो पचार करेक्ट ऑप्शन पे सो 1 2 and 4 ये करेक्ट क्लियर क्वेश्चन नंबर 8 है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम अपॉइंटमेंट रे कौन हुए नीड नॉट नेसेसरी बी मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम ए मेंबर विद इन 6 months यस एटा जानछो में करेक्ट नीड नॉट नेसेसरी बी ए मेंबर of the house within 6 months of the parliament but must become nahi Lok Sabha right condition must be a member of one of the house of the darkar nahi must be a member of the Lok Sabha nahi darkar nahi eta ta amro correct hegala eta single statement question okay then jiba ame question number 9 who allocate the portfolio to the union ministers obviously master ji prime minister union ministers karo portfolio bantibe kana tanku prime minister tapare ye करे ना choose करंती कैसे काम करियार अछि 10 नंबर with reference to the cabinet committee on economic affairs consider करो the following statement it is chaired by the prime minister of india yes cabinet committee माने कैबिनेट कमिटी ए जिनसटा तमे बहुत थर जे कोनसे भी न्यूज़पेपर पढ़ द हिंदू ये से इंडियन एक्सप्रेस कैबिनेट कमिटी मीटिंग हला ये मीटिंग हला से मीटिंग पढ़थियो हैना तो कैबिनेट कमिटी होची गोटे माने कैबिनेट जतिटा कैबिनेट मिनिस्टर तार गोटे कमिटी एटा चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑब्वियसली सब द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी सेटा माने कहि परिया it considered and approves proposal related to the foreign direct investment yes जे कोनोसी ये रे सरकार रो एठी अप्रूवल दरकार थिबो स्क्रूटिनी दरकार थिबो कैबिनेट कमिटी सेठी बसिबो बट हाई लेवल कमिटी एटा डन it is a statutory body ना statutory body ना legally एटार किसी सेमती प्रावधान नहीं but it is a executive body सब बड़ा कैबिनेट मंत्री से तरह आर्टिकल ये रे आसुनी है it is an executive statutory नुहे so this is incorrect statement 4 number it approves major investment proposal in key sectors such as infrastructure industry yes बहुत ही एटा broad statement तमे कहि परियो आउटा इनकरेक्ट भी नुहे तो देखो एमितिया टाइप ऑफ क्वेश्चंस रे तुमको एठी ध्यान देबो पड़िबो करेक्ट इनकरेक्ट बेसिस रे एठी जिवो ए जिन छडा या पे लागू कि नाही यार तो बहुत डाइवर्स काम इट्स डिसीजन आर सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंशियल अप्रूवल भाई प्रेसिडेंट तो निजे यांको ये रे जिवो प्रेसिडेंट हैज टू बी according to the aid or advice of the council of ministers now council of minister is a broad jinso 80 जण खंड पाके एटी मिनिस्टर्स थिबे तांको भितरु कैबिनेट मिनिस्टर्स हला बहुत को तो यांकु प्रेसिडेंट कोन ऑर्डर दे परियो नाही प्रेसिडेंट तो या ऑर्डर चलियो ना सो दिस इज इनकरेक्ट कोटा होचे करेक्ट हमरा 1 करेक्ट 2 करेक्ट 4 करेक्ट 1 करेक्ट 2 करेक्ट ओके 1 करेक्ट 2 करेक्ट 4 करेक्ट डन 11 consider the following statement emoluments or allowances of the governor are determined by the parliament okay correct किए कौन केते गवर्नर केते पाइबो कौन पाइबो सेटा पार्लियामेंट द्वारा ही तो डिटरमाइन हुए 11 नंबर 2 देखो emoluments or allowances of the governor are charged on the consolidated fund of the state yes आउ जदी शेयर रे थिबो तो दीटा स्टेट एटी शेयर एठी करिवे आउ केते कोन परसेंटेज शेयर करिवे से जिनसडा एटी प्रेसिडेंट डिसाइड करिवो धरो दीटा स्टेट लाइक झारखंड छत्तीसगढ़ रो एबे गवर्नर जणे अछि ओके ता माने याकु जति सैलरी मिलिबो तो झारखंड रो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु आउ छत्तीसगढ़ रो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रु मिसे की या सैलरीटा ये बिटिके दबो से बिटिके दबो केते परसेंट दबो यारो केते परसेंट यारो तमे कहबो 49% यारो 51% ए जिंसटा किए निर्धारण करिवो ए जिंसटा हैज टू बी डिसाइडेड बाय द
प्रेसिडेंट बट गवर्नर को एमोल्यूमेंट्स केते तार सैलरी केते हबो कोन कोन ये मिलिबो दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट आई होप दैट इज क्लियर हला परसेंटेज प्रेसिडेंट एमोल्यूमेंट्स पार्लियामेंट डन 3 नंबर देखो द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर कैन बी अल्टर्ड आफ्टर 1 ईयर नहीं जो जाके से गदी रे अछि ता पोजीशन रे अछि तार हार्म करथला बेलिया अल्टरेशन हबनी तार टर्म जाके हाँ गोटे सइला गोटे गवर्नर सइला तापर नेक्स्ट पूर्वरु ताकू जति प्रॉमिस कराइतला बिफोर जॉइनिंग द पोस्ट सेति ताकू मिलिबो एमती नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ता सैलरी एठी करा जाय पारिबो नाही हैला सो 1 and 2 3 नंबर एठी इनकरेक्ट ताहले करेक्ट ऑप्शन कोन 1 and 2 ओनली डन 12 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू द आर्टिकल 156 regarding the term of the governor of the state he can be appointed for 5 years at a time yes third term he can be appointed for maximum 5टा term जो माने समते किछ मेंशन ही नहीं he has no security of tenure can be removed any time by the order of government yes on the pleasure of president governor opposition तो एटा करेक्ट he can continue to hold the office after the expiration of his term जो जाके ता सक्सेसर आसी नहीं सही जाके से ऑफिस टाटी होल्ड करे एटा करेक्ट आंसर हला तो क्वेश्चन पचारची कोटा नॉट करेक्ट हले हमरा बी टा नॉट करेक्ट तो बी रे गोली मारियो नेक्स्ट जीबा क्वेश्चन नंबर 13 with reference to the state council of ministers okay consider करो the following statement the constitution does not specify maximum strength of the state council of minister yes constitution specify करी नहीं सेही पाए आमे 91st constitutional amendment एटी आसीतला सेही थरे कोन हेतला गोटे legal provision एटी थला that was a statutory जे हमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ता पूरा ईयर 15% करिवा ताटू एक्सीडिंग करिवा नाही आ ए जिंस कॉन्स्टिट्यूशन रे लिखा है नाही माने कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफाई एटी करू नाही हला तो एटा हमर करेक्ट The advice tendered by the Council of Ministers to the Governor shall not be inquired into in any court. Yes, Council of Ministers जोटा गवर्नर को एठे देबे ताकू को कोर्ट रे चैलेंज करा जाय परिबो नाही इनक्वायर करा जाय परिबो नाही दिटा को करेक्ट कोटा करेक्ट 1 and 2 both the statement are correct 14 which of the following function are performed by the chief minister of a state okay he advises the governor with regard to the appointment of solicitor general ए भाई solicitor general होचे सेंटर फर्स्ट आसे अटॉर्नी जनरल सरकार रो केस लड़े अटॉर्नी जनरल को हेल्प करे तार सेकंड लीगल ऑफिसर कोई परिया माने ये ताको हेल्प करिया पे आसे सॉलिसिटर जनरल ये रैंक 1 सेंट्रल रो ये रैंक 2 ता पर या पोजीशन लीगल रिलेटेड जिंस एडवोकेट सरकार पे केस लड़ते दिस आर ऑफ द सेंटर्स डन स्टेट रे कोन आसे स्टेट रे आसे एडवोकेट जनरल अब ए एडवोकेट जनरल विषय लास्ट प्रीलिम्स रे भी क्वेश्चन आसीतला आ सेति भाई ए जो टेस्ट नंबर 2 टा ना जो सब्जेक्ट्स गुडा देछि सेही गुडा एबे ओपीएससी सेही थरो क्वेश्चन से डेराइवेटिव करूची आगुरु हमें फंडामेंटल राइट्स जति सब इंपोर्टेंट मोस्ट ये जिन गुडा आस्तला बट क्वेश्चंस एबे कॉर्नर ऑफ द सिलेबस रो भी आसुची तो देखो तो एथर किछि रोल नाही ही हेड्स द इंटरस्टेट काउंसिल ताहले हम प्रधानमंत्री कोन करिवे किछि काम नै इंटरस्टेट काउंसिल माने विभिन्न स्टेट मान क्रेडिट थिबे तार होस्ट टा केमिति गोटे स्टेट रो सीएम एटी कर परियो हां जोनल काउंसिल जेतळे हबो दैट इज आल्सो नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल जोनल काउंसिल बळे रिपीटेशनली एटी हुए आज ये कला आर मीटिंग रे से एमती रिपीटेशनली राउंड वाइज एटी हुए बट इंटरस्टेट काउंसिल रे पीएम जब तक पीएम है तब तक ये क्या करेंगे है ना ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड हाँ स्टेट रो जहार चेयरमैन होची हमर चीफ मिनिस्टर डन तो हमर 3 ओनली इज करेक्ट ओवर हियर 15 विथ रेफरेंस टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कंसीडर करो भाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोन
he is entitled to such emolument, allowances, privilege as may be determined by the president. No, governor emoluments, allowances, तार privilege is to be determined by our parliament. Done? Incorrect. 2 number देखो, when he is the governor of 2 or more state, emolument of allowances गोड़ा share हबो in such proportion, से proportion टा determined by president, not parliament. सेथिପାଇଁ एठी हमरा डीटा को ही एठी इनकरेक्ट हे जाछ. दिस इज वेरी नाइस वैल्यू एडिशन. ए जिनसटा आमे यूजुअली एतेटा ध्यान देई न थाउ, माइन्यूट डिटेल्स रे एठी भूल करियार चांस अछि. सो एटा डुएबल क्वेश्चन. हाँ, किसी आउट ऑफ द बॉक्स एटी आसनी, बट टिके मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रो क्वेश्चन एटा. तो काहे कि बिकॉज़ ओवरव्यू हे जाय, गुटी गुटी छोटे छोटे कॉर्नर वर्ड्स एटी मिस हे जाय. तो neither 1 nor 2 is correct over here. Right. So arrange the following item in correct order of passing of an ordinary bill in the parliament. बढ़िया क्वेश्चन. आ एटा तुमको बढ़िया रिवीजन भी एठी हबो. फाइन. आमे जानिछु बिल रे फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग एगुडा सब हुए. फर्स्ट रीडिंग पर ही गैजेट रे पब्लिकेशन एटी हबो. ता माने एटा होची हमरो जस्ट एटा होची हमरो एटी फर्स्ट रीडिंग. तो प्रथम एटा होची 1 5 5 देखो कोडी अछि 5 दुटा रे अछि. फर्स्ट रीडिंग पर एठी आसी जीवो कंसीडरेशन स्टेज ता थर्ड रीडिंग रे हुए. आ एत बळे विभिन्न क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटिनी एटी हुए. सेकंड फर्स्ट रीडिंग पर स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन ता होची सेकंड रीडिंग स्टेज, जो थरे डिस्कशन एलाबोरेट डिस्कशन एका हुए. तापरे आसे कंसीडरेशन स्टेज थर्ड, क्लॉज बाय क्लॉज एडी स्क्रूटिनी एटी हुए. ओके. आफ्टर एटा होची 5 पर 2 आसीबो. 5 पर 2 आसिला. 2 पर एटा हे गला पर कंसीडर करा जीवो. कंसीडर करला पर थर्ड रीडिंग एटी होबो. ओके. 1 पर 3 आसीबो, 1 पर 3 आसीबो. लास्ट रे हे गला पर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एटी आसीबो. ओके. तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, तापर थर्ड रीडिंग हुए हला. थर्ड रीडिंग पर कंसीडरेशन स्टेज रे क्लॉज बाय क्लॉज एटी देखा जाय. ओके. ए दिटा सेपरेट देइछि, नले जदि भी थर्ड रीडिंग टा एठी न देइ थांता एठी भी तमे कर पारथान. बेसिकली होछि थर्ड रीडिंग टा हेले ही क्लॉज बाय क्लॉज हो ना. सो फर्स्ट थर्ड रीडिंग तापर कंसीडरेशन. ठीक अछि भाई, हमें कंसीडर करिया जते कि अमेंडमेंट आनियार थिबो सब एठी ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज को डिस्कशन से एठी हुए. तापर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एठी आसे हला. सो हमरो ऑप्शन सी एठी करेक्ट आंसर एठी हबो. डन. देन असला हमरो 17 नंबर क्वेश्चन with reference to the money bill. एटा भी बहुत important. money bill, finance bill is just an ordinary bill, but money bill जदि फेल हला सरकार एठी फेल हे जिवो. ए जिंस तो जानथि हो ना 110. they can be introduced money bill कथा होछु हमें either by minister or by private member. no, money bill होची highly sensitive bill. तो केवल लोकसभा रे मनी बिल इंट्रोड्यूस हेई परिबो. केवल मिनिस्टर को द्वारा मनी बिल एटी इंट्रोड्यूस हेई परिबो. मनी बिल यूजुअली पास हे जाए. मनी बिल जदि एटी पास न हुए ता माने सेटा फ्लोर टेस्ट रे फेल सहित एटी सम्मान. ता माने सरकार पाखरे कॉन्फिडेंस नाही. एटी सरकार पाखरे कॉन्फिडेंस नथिले रेजिग्नेशन करिया जाए भी कथा जीवो हबो अल्टीमेट. तो एटा केवल लोकसभा आउ मिनिस्टर ही आनी पारिबो. दे रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर व्हेनेवर ट्रांसमिट टू द राज्यसभा. यस, ये हबो स्पीकर दस्तखत करियो तापर जीवो राज्यसभा पढिया पे. राज्यसभा रो बस किछि आ ये नै चेंजेस पेंजेस किछि नै पढिबो. आ रिकमेंडेशन किछि कर पारियो, बट राज्यसभा रे सेगडा किछि बेसी पावर किछि नै विथ रिस्पेक्ट टू मनी बिल. डिफीट ऑफ द मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट. करेक्ट जिंसो. तो 2 नंबर 3 नंबर हो हमरा करेक्ट. तो हाउ मेनी पचारची व्हिच पचारनी, तो सेट पे केयरफुल रहइबो. हाउ मेनी हेले ओनली 2 आर करेक्ट. नंबर 2 नंबर 3 इज करेक्ट. डन. 18 नंबर क्वेश्चन देखिबा. देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंबरशिप ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर इनकरेक्ट.
इनकरेक्ट पचार आम इनकरेक्ट को देखा देखो फॉर क्वालिफाइंग टू लोकसभा राज्यसभा पर्सन भी एटलिस्ट 25 वर्ष आ 35 वर्ष ना राज्यसभा 30 इयर्स इठी दरकार 35 नुहे 30 वर्ष इनकरेक्ट ए पर्सन बिलोंगिंग टू एससी कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फ्रॉम जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी टू यस जमती किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट अगेंस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ तार निजर डायरेक्शन ऑफ तार निजर पार्टी जदी ताल तो सेटा डिफेक्शन कला पार्टी द्रोही कला ताकू डिस्क्वालिफाइड करा जिवो ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन यस काना सेठी त हमर व्हिप रो कांसेप्ट आसे ना फर्स्ट डिग्री व्हिप सेकंड डिग्री व्हिप निर्देश दिया तो एठी वोट करिवो सेठी वोट करिवो ये जदी मन इच्छा एठी कला ताले एठी असुविधा ताले 2 या 3 करेक्ट अछि को नंबरटा हमर इनकरेक्ट अछि select the correct answer amara incorrect jodi pacharchi so one only is incorrect done 19 consider the following statement if a person is elected to both house of the parliament he must intimate within 10 days in which house he or she deserve to serve otherwise both the seat become vacant nahi agents ropa 1951 mention अछि जदि both the house माने जने लोकसभा सीट भी जीति गला राज्यसभा रे भी ये अछि ताहाले से जदि 10 दिन भितर इंटिमेट न करे से लोकसभा रे सीट ये करिवो कि राज्यसभा रो जदि ताकू करा हेतिबो से उठिथिबो ताहाले बोथ सीट वैकेंट हबो नाही राज्यसभा रो सीट ता बाय डिफॉल्ट एटी वैकेंट हे जो तो दिस इज आवर इनकरेक्ट 2 नंबर जदि गोटे पर्सन दीटा सीट रे इलेक्ट हे जे गोटे हाउस रे माने लोकसभा रे जेमती दीटा जगह उठिया होंती बड़ बड़ नेता माने दीटा सीट रे जिति गले इलेक्ट हे चंदी से तांकर गोटे ऑप्शन को बाछिया पड़िबो नॉल बोथ द सीट बिकम वैकेंट यस तांको एठी संगे संगे करिया पड़ियो से को थ्रू एठी एमपी ठिया हेबे माने एमपी को थ्रू निजर सीट ता रखिबे नॉल वैकेंट हे जो तापरे इफ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज आल्सो इलेक्टेड टू द अदर हाउस जति गोटे सिटिंग मेंबर आ गोटे को इलेक्ट एठी होचंती हिज सीट ऑफ द फर्स्ट हाउस बिकम वैकेंट यस करेक्ट गोटे होचंती आ गोटे को पुनी इलेक्ट होचंती ताले तांको वैकेंट हे जो फर्स्ट सीट हला तो which of the following are not correct आमे देखु जो not correct देछि माने ऑप्शन नंबर 1 is not correct डन कोडिया एटा भी गोटे भलो वैल्यू एडिशन यूजुअल क्लासेस रे एगडा हमरा रूपा विषय रे एटा रूपा 1951 तो एटा गोटे वैल्यू एड भी करि दियो हला which of the following bill lapses on the dissolution of the Lok Sabha ओके बढ़िया क्वेश्चन आ इथर सदाळे कंफ्यूजिंग होंती देखो बिल पास्ड बाय लोकसभा बट पेंडिंग बाय राज्यसभा हमरा बिल केमते हुए लोकसभा रे पास हबो राज्यसभा रे पास हबो प्रेसिडेंट रो एक्सेंट रे पास हबो ता माने एठी बिल टाडी पास हला तो एठी कोची बिल लोकसभा रे पास हे छि राज्यसभा रे पेंडिंग अछि लोकसभा एठी कटि जाउ बिल तो कटि गला राज्यसभा तो होई पानी बिल जीवो केमते ता माने एटा कोन हबो लैप्स हबो हला पचारछि लैप्स ना लैप्स एटा हे गला लैप्स माने ए बिलटा हेला नाही बिल पास्ड बाय बोथ हाउस ये पास करछि आ ता मझी रे कोन हला लोकसभा डिसोल्यूट हे गला तो हे गला कोनटा हे गला एटू प्रेसिडेंट पाखरे पेंडिंग अछि ना प्रेसिडेंट सबमिट करलो खाना राज्यसभा तो गुटे हाउस तो दे दला यार भी देई गला जिबा पूर्वरु डिसॉल्व पूर्वरु ये भी दे दला त माने एठी प्रेसिडेंट देले माने बिल रेडी हे जिवो तो बिलटा स्टे करिवो लैप्स करिवोनी सो बिलटा वैलिड रहिवो ओके एटा गुटी लैप्स हबो बिल पेंडिंग इन राज्यसभा फाइन बिल जदी राज्यसभा रे पेंडिंग अछि राज्यसभा रे पेंडिंग रहिबो लोकसभा को जाइनी माने लोकसभा रे पास हेइनी ता माने राज्यसभा रे बिलटा इंट्रोडक्शन हेतिबो राज्यसभा रे इंट्रोडक्शन हे कि राज्यसभा रे भी एठी कोन हेछि पेंडिंग हे कि अछि हैला तर जो थरे इंट्रोडक्शन हेतिबो सेही जगह रे पेंडिंग हे कि ता माने एठी आसीनी ता मझरे लोकसभा एठी कटि गला डिसॉल्व हे गला तो कौन हो गला सेटू राज्यसभा रे जदी क्लियरेंस मिल गला जेबे लोकसभा पुनी रिज्यूम करिवो सेटा एठी देबे तबे दीटा हला पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर मार के एसेनेटिव मिल तो एटा भी स्टे करिवो डिसॉल्व हबो नाही तो पचारछि कोटा लैप्स हबो हला केवल ऑप्शन 1 टा 1 ओनली एठी लैप्स हबो डन देन 21
21 कहूँ कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा देखो कॉन्स्टिट्यूशन बस सेति कहूँ से केयरफुल रीडिंग आमर ये नेसेसिएट हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन केवल एति कहूँ देयर राज्यसभा गोटे परमानेंट बॉडी हम तार मेंबर फिक्स टर्म हम कि केते फिक्स हम से जिनस कॉन्स्टिट्यूशन करना से सब रोपा रे आछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट रोपा 51 रोपा 50 मोर रिलेटेड टू इलेक्शन रोपा 51 तार क्राइटेरिया रिलेटेड सब तापरे एटा हो इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 नंबर देछि ओनली द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा स्पीकर किए भाई स्पीकर रो काम हैला केवल परिचालन करिवो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ए तमे कुह ए बिल हबनी देखा कोन होबो बस नो नो सेती काम स्पीकर तो देखिथियो हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग रे केमतो सब हुए डिसॉल्व करिया पावर ओनली प्रेसिडेंट रो इनकरेक्ट which of the statement are correct nothing neither one nor two okay 22 number question consider karo the following statement with reference to the parliamentary proceeding in India hala okay Attorney General of India has the right to speak and take part in the proceeding of either house or any joint sitting yes Attorney General को एठी अछि असे बसंती भी मिनिस्टर जे मेंबर नुहे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ एनी हाउस सेमथि किछ नै जा को पाइले ताको मिनिस्टर कर परियो 6 मास भीतर ताको को गोटे हाउस रो मेंबर एठी हबाउ पड़िबो तो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट वन ओनली इज करेक्ट डन तो लास्ट ये रे मु कहतली आमे जतले इंडिविजुअली गोटे दिटा स्टेटमेंट वाइज सेटा ठीक कि सेटा भूल एठी कर दबा आमे सदाले सीक्वेंस रे क्वेश्चन सॉल्व करिया जोटा कि मल्टी स्टेटमेंट रे बहुत एठी हेल्प करे है ना तो सीक्वेंस रे जदी करिवा ताहले हमको एठी इजी हबो टू आंसर आ एरर फ्री री आमे एठी कर पारिया क्वेश्चन नॉट पकाउ से करू से गुडा नै स्टेटमेंट करेक्ट अछि कि नै सिंपली 23 नंबर Constitution of India provide करछि mechanism for joint sitting of the two house of the parliament जदि deadlock हैला सेटा पे करछि बिल्कुल करछि in which of the following cases is this feature available ordinary bill रे yes ordinary bill रे ही available हैला finance bill is also kind of ordinary bill available constitution amendment bill article 368 एथरे both the house of the parliament को separately pass हबारा अछि एठी तो एथरे जॉइंट सिटिंग रो प्रावधान नै मनी बिल रे तो राज्यसभा रो टेक हे किछ नै और जॉइंट सिटिंग हबो कोट हैला तो दीटा करेक्ट कोन हमरो 1 आउ 4 इज करेक्ट माने ऑप्शन नंबर ए डन 24 नंबर क्वेश्चन कंसीडर करो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडजॉर्नमेंट मोशन हैला एडजॉर्नमेंट मोशन माने एटा होची मोशन जो थरे गोटे सरकार को सेंश्योर करा जाए राइट सरकार को गोटे मोर इंपोर्टेंट जिनस पे फोर्स करा जाए टाइम वेस्ट करनी याड ध्यान दियो तो एई मोशन को हबे 50 टा मेंबर करो सपोर्ट एठी दरकार तापर मोशन एठी स्टार्ट हो करेक्ट जिनस एई मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा ने मेनली एडजॉर्नमेंट मोशन टा लोकसभा रेटी हुए हला इंपोर्टेंट दिस वन एटा इनकरेक्ट तो which of the statement correct only one is correct done fine तो adjournment motion cut motion bulletin कोन एगुडा भी सब ध्यान दब 25 with reference to the Nari Shakti Vandan Adhiniyam consider the following statement 1/3 reservation women in the amara Lok Sabha state assembly yes provision related to the reservation of seats at seas after the expiration of the 20 years well 8 होची incorrect ଆଉ एटा बेसिकली हमें जानछु 1/3 सीट रिजर्वेशन 106th अमेंडमेंट विषय तमे जानथिबो सेठी दीटा नुआ ऐड करा हला 330 330 ए 332 ए ए दीटा ऐड करा गला तापरे 239 ए एथरे अमेंड करा गला ए आर्टिकल हला एग्जैक्ट आर्टिकल भी मन रखिया रिक्वायरमेंट नाही एडिटर सेमती भी सॉल्व हो बस हाँ 106th अमेंडमेंट आमर जो 15% रिजर्वेशन 15% 1/3
one third of reservation by female से जिनस डाटी आसला नेक्स्ट जिबा आमे क्वेश्चन 26 so 26 हमर कहूची consider the following statement 0 hour is a formal device available to raise matter without any prior notice okay without prior notice part ठीक अछि but एटी जो statement अछि एटा हो जो formal device तो 0 hour is a informal device जो procedure of conduct जो parliament रो थाए से 0 hour रो सेमते किछि गोटे formulation सेटे नाही तो it is an informal adaptation हैला तो सेति भाई this is incorrect तापरे 2 नंबर short notice question are answered in writing short notice questions कोडा orally answer करा जाए ता सहित एटी काउंटर क्वेश्चंस भी जेहेतु ओरली हुए काउंटर क्वेश्चंस भी एटी अलाउड थाए ठीक अछि तो व्हिच ऑफ द गिवन आर करेक्ट नीदर वन नॉर टू आर करेक्ट डन देन हमें देखिए 27 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड कोर्ट्स अ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज अच्छा रिजर्वेशन को बॉडीज रो अछि पंचायत रो अछि हम रिजर्वेशन जोटा कि हमें देखियो पाइबा आर्टिकल 243 डी रे रिजर्वेशन अछि पंचायत इलेक्शंस रे लोकसभा रे हमर रिजर्वेशन एटा हमें देखियो पाइबा 330 रे देन राज्यसभा तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रे हुए ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रे तो एठी रिजर्वेशन रे किछि कांसेप्ट आसोनी ओके सीट जो रिजर्वेशन थाए लाइक एठी ठिया हेबे SC ST की अलग को कम्युनिटी रो से जगह रे एमएटी रिजर्वेशन देखिया तो पंचायत लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन रे हमर रिजर्वेशन का थाए राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल रे रिजर्वेशन से का न थाए डन ताहले 27 रो कोटा 1 2 और 4 सो 1 2 एंड 4 ऑप्शन डी देखो तमे आर्टिकल वाइज लोकसभा तो मन रही जिवो हमर 243 डी टा पंचायत रो मन रखो काहे कि ना पंचायत रो क्वेश्चन आसे आ आर्टिकल वाइज आर्टिकल ता क्लॉज बाय क्लॉज भी एटी क्वेश्चन आसे तो सेति भाई ए बी सी डी जति सब अछि पंचायत म्युनिसिपैलिटी रो सेटा टी कष्ट करियो पड़िबो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर डन देन हम देखिया क्वेश्चन 28 consider the following statement with reference to the speaker of lok sabha the president of india administer the oath of the office to the speaker of lok sabha look speaker of lok sabha पई किछि oath administration दरकार नाही से बस इलेक्ट हे जाय दैट्स इट तारो किछि oath के सेरेमनी एटे रिक्वायरमेंट नाही तो एटी प्रेसिडेंट ताको oath सेरेमनी करेबो सेटार किछि आवश्यकता नाही डन Speaker is the chairman of business advisory committee and rule committee. Yes, business advisory committee माने कौन काम हबो लोकसभा ये सेटा ठीक अछि व्यापार नु है कौन काम हबो स्पीकर हाथ रे तो था ना डन Speaker is the guardian of privilege of member of the house done salary of speaker consolidated fund of India रो आसु एटा भी डन तो कोटा among the above is correct I'm at 2 I'm at 3 I'm at 4 2 3 4 this is correct then देखिवा 29 who among the following presides over the proceeding of Rajya Sabha जेतबळे office of the chairman आउ deputy chairman vacant थिबो तो एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन जेतबळे chairman office माने vice president रो office vice president राज्य सभा रो chairman ओके कोन कोइ परिया ex officio chairman डेप्यूटी चेयरमैन रो पोजीशन जतले वैकेंट थिबो सेतले प्रेसिडेंट कोन करिवो सेतले एनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा प्रेसिडेंट कोन करिवे ताको एठी अपॉइंट करिवे टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हला सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री मोशंस कैन बी मूव्ड ओनली इन लोकसभा नॉट इन राज्यसभा ओके लोकसभा रे और राज्यसभा रे को पार्लियामेंट्री मोशन एटी मूव ही परिबो सिंपल डिफरेंशिएशन केमती करिवो कि तमे देखिवो जो मोशन कि जो भी हमरा मोशंस एटी सरकार को गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं कि आसुची से जिंस इज ओनली पॉसिबल इन लोकसभा क्लियर कारण राज्यसभा पाखरे सरकार को अकाउंटेबल नहीं कि आसीबारो एटी किछि प्रावधान रहिबनी काना दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ राज्यसभा सेटा काम ऑफ द लोकसभा
तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तार फ्लोर टेस्ट अकाउंटेबल यस केवल लोकसभा रेडी हम सेंसर मोशन माने स्ट्रांग डिसअप्रूवल लोकसभा रेडी हम प्रिविलेज मोशन टा बोथ राज्यसभा लोकसभा दीटा रेडी हम कहीं कहार कौन प्रिविलेज ब्रीच किए किए ता सीमा उल्लंघन करुच्ची से सब जिन हूँ प्रिविलेज मोशन आसे सो दीटा चले कॉल अटेंशन मोशन दीटा चली पार कट मोशंस माने फाइनेंस रिलेटेड जिनस है सरकार एक्सपेंडिचर जी से देखी से कट मोशंस एटा जदि पास हो सरीगला कथा तो यहाँ भी आमर लोकसभा फ्लोर रेडी हम ओके सो 1 2 आउ 5 एटी करेक्ट आंसर हम 1 2 एंड 5 बी ओनली माने ओनली 1 2 5 डन ओके प्रथम हूँ मनी बिल तो आर्टिकल 117 एंड 110 ये कौन मनी बिल केवल लोकसभा आसपार विथ प्रायर कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट डन तो मनी बिल आसुची कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हाँ आउ मनी बिल टा ओनली मिनिस्टर नहीं कि आसी पार नो प्राइवेट मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जी किए भी नहीं कि आसी पार प्राइवेट प्लस मिनिस्टर जी भी नहीं कि आसी पार ईदर ऑफ द हाउस रे नहीं कि आसी पार विदाउट प्रेसिडेंट अप्रूवल भी नहीं कि आसी पार है बिल रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट तामाने अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल आमे कहबा 3 एटी प्रायर प्रेसिडेंट रो नोटिफिकेशन की एटी अप्रूवल कंसेंट तार एटी दरकार तो 1 and 3 are the correct answer 1 and 3 C next हमें देखिवा question 32 consider the following statement about the adjournment motion एटा भी गोटे strong censure नहीं कि asset towards the सरकार ओके कि सब छाड़ strong disapproval नहीं कि asset This motion introduced only in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Correct जिनसे कहना accountable नहीं किया उसकी सरकार को. The primary object of this motion is to draw attention of the House to a recent matter of urgent public importance. So this is the actual purpose. Adjournment motion माने बाकी सब जिनसे बंद करो, important जिनसे को नहीं किया सो, जहाँ सरकार कोची सेटा ठीक कोने disapproval आउ existing जिनसे को adjourn करी आपने ये motion टा नहीं की आना जाए, है ना? And this motion also accountable नहीं किया से to the government. तो सही था कि बड़ा लोकसभा रेडी possible. तो which of the given are correct? Both 1 and 2 are correct. 33. Consider the following statement about closer motion. Okay. It can be moved in both house of the parliament. Yes. Closer motion माने गोटे जिनस अच्छी ठीक अच्छी भाई बहुत डिस्कशन है एटा को बंद करिबा आउ जहार मत सेटा वोटिंग रेडी करथियो जदि मोशन अप्रूव हुए डिबेट इज स्टॉप्ड एंड मैटर इज पुट टू वोट बोथ 1 and 2 ओके तो डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एटा बहुत गोटे इजी टॉपिक टे थरटे पढिले तो सब प्रकार डाउट टी क्लियर हे जिवो क्वेश्चन आराम से एटा डुएबल हला आ ए कॉर्नर ए गुडा को यूजुअली हम फोकस करना था सेति पे टिके कष्ट एठी लागिता है बट थरटे एठी पढि दियो हे जिवो Which of the following is not correct with regard to the election to the Lok Sabha? The election are on the basis of adult suffrage. Yes. Adult suffrage माने 18 रु उर्ध्वर adult जो माने समस्त voting right अच्छी irrespective of the caste, creed, gender. Election commission is required to conduct the election. Correct जिनसा हमारा. Electoral roll are prepared under the direction and control of President of India. No, under the direction and control of Election Commission of India. Okay, এটা incorrect. On the request of the election commission, जदि request कोला, president is required to make available the election commission staff जी की discharge of the function by necessity हुए. Okay, additional staff दरकार management पाई तो election commission requirement रे president इठी कौन करे available करे दिया staff को. Okay, then ए जो the election commission is required to conduct the election agents रा हमरा से article 324 तो क्वेश्चन पचारछि कोउटा नॉट करेक्ट ओके ए तीनटा करेक्ट सी ऑप्शन सी रे एटा गोली मार के आसीबो एटा नॉट करेक्ट डन इन 35 हमें देखिया व्हिच इज करेक्ट अबाउट अ स्टार्ड क्वेश्चन ओके 35 आंसर इज गिवन ओरल स्टार्ड क्वेश्चन रे आंसर ओरली दिया जाए करेक्ट आंसर आंसर इज गिवन इन रिटन मेजरली एटा अनस्टार्ड क्वेश्चन रे रिटर्न दिया जाए
सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड जेहेतु ओराली उत्तरटा ट्रांजैक्शन हुए तो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन आस्क कई पारिबो सप्लीमेंटरी क्वेश्चन कैन नॉट बी आस्क्ड सेमता नहीं कई पारे मे बी डिस्कस्ड ऑन आंसर हाँ बेले बेले डिस्कशन भी हो जाए तो सेटा रेस्ट्रिक्शन नहीं किछि ओके हमें टाकू ठीक मारिया स्पीकर कंट्रोल ऑन आंसर आंसर ऊपर स्पीकर कंट्रोल करे स्पीकर प्रोसीडिंग ऊपर एटी कंट्रोल करे ओके सो 1 3 and 5 एटी करेक्ट अछि किंतु 1 आउ 3 स्टार्ट क्वेश्चन रो फीचर्स कैन बी आस्क्ड अब 5 रे दिस इज अ कंडीशनल मे बी मे नॉट बी मे बी गोटे डिस्कशन ता ऊपर नहीं के आसी पारे मे नॉट बी तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 1 3 कोठी अछि मारो दीदीटा जेहेतु अछि 1 आउ 3 दिस इज करेक्ट आउ 5 नंबर टा भी ठीक बट 5 3 आउ 5 बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट ओके सो 1 आउ 3 इज मोस्ट सुइटेबल दिस इज अ कंडीशनल तो सेति भाई एटा पार्शियली करेक्ट है 5 नंबर का तो एटा ध्यान देबो काना क्वेश्चन रे नियरेस्ट करेक्ट तमे एटी करियर अछि so nearest correct 1 out 3 most appropriate to the correct answer it okay then 36 hame dekhiya this committee examines the promise of undertaking given by minister from time to time on the floor of the house and report on the extent to which set are carried out floor of the houses रे ठिया है कि आमे एमिति करिवो आमे सेमिति करिवो जति प्रॉमिस मेड थाए को कमिटी सेटा को स्क्रूटिनी करे कि वेरीफाई करे एटा होची गवर्नमेंट एश्योरेंस जहाँ प्रॉमिस दिया है जहाँ एश्योरेंस दिया है सेटा फुलफिल हला कि नहीं सेटा एटी करिवो सो दिस इज द करेक्ट वन अच्छा एई थारे मेंबर्स माने 15 टा मेंबर फ्रॉम लोकसभा थांती आउ 10 टा मेंबर थांती फ्रॉम राज्य सभा डन एश्योरेंस कमिटी 37 which of the following statement regarding the state legislative council correct legislative council state ro hela mane upper body joda sabu rajya re nahi the legislative council is a permanent body and cannot be dissolved yes rajya sabha type ro state re bi eta oda permanent body maximum strength of the legislative council shall not exceed 1/3 of the total strength of the legislative assembly vidhan sabha ro maximum jeti strength athu 1/3 ru adhika legislative council re haba kotha nuhe this is also correct member of the legislative council are directly elected by the people jama nahi तारो गोटे क्राइटेरिया अछि 1/6 एठु आसीबो 1/6 यूनिवर्सिटी येरो आसीबो सेरो आसीबो the constitution make it mandatory for all state to have a legislative council एटा भी जमा नाही हा छोटी राज्य रे अछि सब राज्य नाही तो करेक्ट आंसर कोन 37 रो हमें देखिबा 1 and 2 only is correct done then asibo amro 38 which of the following statement regarding the state legislative assembly माने विधान सभा एटी करेक्ट अछि legislative assembly is directly elected house in the state legislature yes direct election एटी हुए जेमति लोक सभा रे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम सेमति हुए maximum strength can be 550 members no maximum strength is 500 members 500 ml maximum minimum होचे 60 किछड़ा एक्सेप्शन अछि सिक्किम आ गोवा बलिया जोथरे कम मिनिमम संख्याटा भी चलिबो काना ता पॉपुलेशन बहुत एटी कम तो मैक्सिमम एठी होची 500 ना कि 550 द गवर्नर कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली करेक्ट आंसर स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना स्पीकर को एठी इलेक्ट करा जाए ओके दिस इज करेक्ट इनकरेक्ट तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो तो ए के आउ 3 नंबर होची एठी करेक्ट डन देन देखिबा 39 so questions are easy माने conceptual अच्छी questions very easy अच्छी बस टिके तमर clarity टिके detail रेट पढ़ो हेजु arbitrary question एबे जे बहुत माने सेमते सतटा इंट्रोड्यूस हेनी आगु को हबो एबे तो हम रिवीजन होची प्रायोरिटी ओके डेप्थ होची प्रायोरिटी छोटे डिटेल्स को मन रखिबा कि से भीतर डिफरेंशिएट करबा दैट इज अ प्रायोरिटी 39 consider the following statement about the collegium system the Supreme Court or collegium system 5 member body yes which is headed by the chief justice incumbent chief justice of India yes हमें जानचु 1+4 arrangement अछि current system रे
how comprises other four senior most judges of the court at the same time. Absolutely correct. This is the collegium system. बहुत विस्तृत भाव में आम एटा हमर फाउंडेशन की फुल कोर्स डिस्कशन करछु. The parliament by law has evolved the collegium system. नाइ second judge जो केस रो collegium system एटी इवॉल्व हेची and this is the device of the supreme court निजे ही सेटा इवॉल्व करछि. parliament रे सेटर किछि नाही रो. The judge of the supreme court or high court are appointed through the collegium system. Correct. Collegium system was introduced in the year 1993 by Justice P.N. Bhagwati and the landmark first judge case. 1993 date ta correct अछि but landmark second judge case. First judge case रे नुहे. Okay. हमर first judge case ता 1981 रे हितला. In fact first judge case रे एटा आस्तला जे appointment रे executive मानकर रोल टाटी रहू. हला लेटर सेकंड जज केस रे नाही माने कहले नाही कोलेजियम सिस्टम गुडे ठीक करिबा. सो दिस इज इनकरेक्ट. ता सहित एडी उडा ना अछि पीएन भगवती करो एठी अपॉइंटमेंट रिलेटेड रे किछि एमती रोल नाही. इनफैक्ट पीएन भगवती मेनली आमे कहि परिया तांको कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अछि पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. हमें देखिए 1 टा करेक्ट and 3 टा करेक्ट. 1 and 3 are correct. Done. Question 40. Under which article does the President of India refer to the Supreme Court regarding the process of appointment and transfer of judge in Supreme Court and High Court? बहुत important article आउ एटा को नै कि एबे डिस्कशन हेछि काने रिसेंटली 2025 रे ए आर्टिकल टा रेयर आर्टिकल बट दिस इज इन्वोक्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. जो रिसेंटली गोटे केस टे हेछि तमे देखुतबो सुप्रीम कोर्ट एटी ऑर्डर दे दे जे रिगार्डिंग आर्टिकल 200 आ 201 कि जो जिंस गवर्नर एटी प्रेसिडेंट रो मतामत पई रिजर्व कर दोछि ता ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहिछि गोटे टाइम लाइन एटी सुप्रीम कोर्ट कर देछि. ना प्रेसिडेंट एटी कहछि सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 143 कंसल्टेशन रो जो जिनसटा जोटा आउ को देश रे नाही जोटा इंडिया रे अछि. अमेरिका रे भी एई सुविधाटा नाही इंडिया रे अछि. प्रेसिडेंट चाहिले सुप्रीम कोर्ट थारु एडु कंसल्टेशन एटी करि परिबो. ना एई आर्टिकल को इन्वोक करके प्रेसिडेंट पचारछि कोन एटा ठीक कोन कोर्ट पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट को एटी निर्देश दी परिबो टाइम लिमिट. तो दिस इज अ वेरी हमरो गोटे हॉट टॉपिक टे एठी चले छै. तो एई आर्टिकल रिगार्डिंग तमे मन रखो काना एटा क्वेश्चन आसिया प्रोबेबल बहुत चांसेस अछि काना दिस इज लैंडमार्क. आ सेमिते देखियो गले सुप्रीम कोर्ट रो रोल एटा नु है कि से प्रेसिडेंट को दबो बट एटा जुडिशियल एक्टिविज्म इन अ गुड फॉर्म. ओके. तो ए जो टसल टाइटा चलछि बिटवीन द एग्जीक्यूटिव ऑफ जुडिशियरी दिस इज अ क्लासिक लैंडमार्क. आउ एटा 2025 रे इन्वोक हेछि. रेयर बहुत रेयरली एटा हुए 2-3 थरो मात्र ही हमर एटा हेछि. देखियो जेतले सेकंड जज केस हमर चलथला 1993 ता सहित हमर 1998 एटा होछि सेकंड जज केस एटा होछि थर्ड जज केस. एती बड़ को प्रेसिडेंट एटा इन्वोक करथला पचारथला रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ द जजेस. हला आउ एबे जोटा हेछि सेटा अलगा केस रे बट सेटा दैट कम्स अंडर आर्टिकल 143. ओके. सो एटा टिके भल सेटी प्रायोरिटी रे पढा. देन आर्टिकल 127 ए तो एड हॉक अपॉइंटमेंट विषय रे कहूछि. क्लियर जेतोले शॉर्टेज हे जाय कोन सेटा का संख्या जजेस मन को संख्या जेतोले शॉर्टेज हे जाय सेतोले अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस इमरजेंसी बेसिस रे ताको अपॉइंट करिया पे से गुडा हमर आर्टिकल 127 रे अछि. 41 रे पचाछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जज can be appointed in a Supreme Court of India. Ad hoc judge Supreme Court of India जेतबळे हमरो ये था जजेस मन को शॉर्टेज थाए सेतबळे ad hoc judges एटी आस परिबे. एडिशनल जज माने एटी आसंती हाई कोर्ट रे सुप्रीम कोर्ट रे नहे. ओके. सो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. 1 is true 2 is false. एगडा हाई कोर्ट रे एटी आसंती. ad hoc judge माने सुप्रीम कोर्ट रे एटी आसंती. यांकर आर्टिकल वाइज जो देखिबो एड हॉक जज आमे ऊपर ही देखलो आर्टिकल 127 एठी चीफ जस्टिस करे विथ कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके.
एड हॉक जज विषय एटी कोट लिखाई छी आर्टिकल 224 रे एटी तुमको देखियो पाए. Then 42, the guardianship of Indian Constitution is vested in Supreme Court. Done. Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? Okay. Dispute government of India, one or more state, yes. Correct. Eta gote ru adhika state eta original jurisdiction आसुची इंडियन सरकार भारत सरकार आउ स्टेट राज्य भीतर डिस्प्यूट हेले गोटे की अधिका हेले सुप्रीम कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रे आसुची. डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट एटा भी सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन रे आसुची. डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन टू द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देखो एई सब जिंस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रो कहार आसुची हाई कोर्ट रो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रे आसुची. बेस्ट वे टू रिमेंबर इज राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस. ओके से पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी रो तो एटी इशू थिबो ना तो सेडा हाई कोर्ट रो एटी काम. एंड इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एई जिंस काम होची ऑफ अ ट्रिब्यूनल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रे आसीबोनी एटा गोटे ट्रिब्यूनल से मैटर टाको सॉल्व करिया पे गोटे एस्टैब्लिश एटी हबो. तो 1 आउट 2 एटी करेक्ट. Then question 44, consider koro the following statement regarding the advisory jurisdiction of the Supreme Court of India. The Supreme Court India tender advice to the President on his own initiative. Nahi, President pacharle hi own initiative no hai. 1 4 3 very important. Hela. Supreme Court of India tender advice if the President seeks such advice. Eta hoje correct. Supreme Court can advise only in matter related to the fundamental right of the citizen. को matter रे हेले भी हबो हैला से fundamental right of the citizen हो से legal advice हो कि किछि हो Supreme Court देख पाए. Very unique feature to the Indian Constitution. So which of the statement is correct? Our statement only 2 is correct. Done. Okay. 45. Which of the following statement it is correct? The Supreme Court cannot interfere with the delimitations of the constituencies. Yes. Correct answer. And this is according to the Delimitation Act. Amaro जो होची से according हबो Supreme Court interfere सेतर करिवनी. Supreme Court cannot question the detention की arrest of a person if has been made in accordance with the procedure established by law. Article 21 clearly कहूची except the procedure established by law. However, जदि मैलाफाइड इंटेंशन रे थिबो जेहेतु हमर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी एबे चलछि विथ रिस्पेक्ट टू द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट सेटा कर परिवो बट यूजुअली पीएल प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रे कोर्ट किछि एठी नै के आसे नाही. ओके दिस इज आल्सो करेक्ट. द सुप्रीम कोर्ट कैनॉट डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट करि परिवो. Whatever violates the fundamental right, Supreme Court ताको unconstitutional की ultra wires की void इटे declare करी परिबो. Supreme Court cannot question the decision of the speaker, okay, as to whether the bill is money bill or not. एटा correct है. So कारण हमें देखो आधार कार्ड रे जतोले बिल इटे आस्तला money bill हिसाब रे पास हेतला कोर्ट कहला स्पीकर डिस्कशन रे अछि कोटा money bill no है. हैला तो 1 2 और 4 it is correct answer. 1 2 and 4 1 2 and 4 none. 46, in which of the following statement are correct? In DC Wadha versus State of Bihar case, Supreme Court commented on promulgation of the ordinances. Okay, look, DC Wadha और State of Bihar case रे Supreme Court ऑर्डिनेंस विषय कहला. सुप्रीम कोर्ट एटा भी कहला कि मन इच्छा ऑर्डिनेंस नहीं कि जो आसीबाटा अब से भी पार्लियामेंट आगे माने हाउसेस आगे पेश न करिबा दैट इज अ फ्रॉड. ओके तापर सुप्रीम कोर्ट रो स्टांस थला ऑर्डिनेंस ता स्पेशल और स्पार्सिंग सिचुएशन रे ही यूज हबो. ऑर्डिनेंस ता गोटे पैरेलल लेजिस्लेशन नुहे हला. लेजिस्लेशन हैज टू बी थ्रू द नॉर्मल प्रोसीजर. लोकसभा रे राज्यसभा रे पास के असेंट हबो. ऑर्डिनेंस इन इमरजेंसी माने नेशनल नो है कि स्पार्सिंग बहुत लिमिटेड कंडीशन रे स्पेशल कंडीशन रे ऑर्डिनेंस एटी यूज हबो. द करेक्ट आंसर इज एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड आर्टिकल 352. एसआर बोमाई केस रे रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल रूल जो
तुआ को तुआ नहीं कि आसतला सेंटर स्टेट को हैरेस करिया पे ए जिंसडा प्रेसिडेंट रूल लागू कर दोतला से जिंस डिस्कशन हेची आ से जिंस आर्टिकल 356 रे अछि ना कि आर्टिकल 352 रे तो माइन्यूट डिटेल रेडी केयरफुल रहिबो हला एटा टिके ध्यान देवा क्वेश्चन डा कना मिस्टेक होबार चांसेस एतरे भलो अछि मिनर्वा मेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करथला फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री ऑफ फेयर इलेक्शन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस ऑफ 1975 इमरजेंसी केस जोटा को हमें कहूछु सेथरे हेतला मिनर्वा मेल केस रे एडी फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी रो बैलेंस एटा हेतला इनकरेक्ट केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट कांसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने के आसला ऑब्वियसली हला तो 1 आउट 4 इज करेक्ट डन 46 क्वेश्चन 47 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट करछि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट माने जुडिशियरी निजको संकुचित करिके रहिबो बार बार अन्य विंग्स सहित एटी लड़िबोनी कि तांको डिसीजन को काउंटर करिबोनी कि काटिबो नाही हला इट इज द काउंटर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म रे पूरा फ्रंट फुट रे खेलिबो एटी कोर्ट जुडिशियल रेस्ट्रेंट रे कहबो मो काम करबी अन्य माने अन्य काम करंतु मु डेई पड़िबिनी आउ का डिसीजन मचरे ओके ए कोन कहूची इट रिक्वायर जजेस टू ऑलवेज डिटर नाही एटा जुडिशियल अगेंस्टिसिज्म हे जो इट एनकरेज जजेस टू लिमिट देयर ओन अथॉरिटी to interfere with the decision of other branches of the sarkar correct it allows judges to engage in judicial activism jetawale individual rights right protection aschi this is more judicial activism na ki judicial restraint so eta most correct it is a rigid or inflexible approach judicial ability to interpret and apply law nai interfere अन्य मानकर decision रे करिया law interpretation रे किछि एठी restrictions न थाए so this is the appropriate 48 kochi with reference to the constitution of india consider the following statement no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be unconstitutional ki constitutionally invalid high court pakhre bi achi power the word declare kar paribo so it no high court jehetu likhichi so this makes the statement incorrect amendment to the constitution of india cannot be called into question by supreme court of india tar to kamo seta na so quota correct neither one nor two it is correct okay 49 original jurisdiction means the power of high court to hear dispute first instance is not way of appeal okay which of the following included under original jurisdiction of a high court enforcement of fundamental right of citizen yes original jurisdiction re achi ethi okay disputes relating to the election of member of parliament state legislature re yes achi ethi original jurisdiction re cases ordered to be transferred from a subordinate court involving interpretation of the constitution of to its own file okay eta bujheo chesta karo जेतले सबऑर्डिनेट कोर्ट रे एमती केसेस हबो जो थरे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट तो सेटा भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अछि हाई कोर्ट के से नहीं परिबो कि देई दे मते कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड मैटर सेही पार्टटा मते देई दे सेटा मोर पावर अछि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रे ओके सो दिस इज आल्सो करेक्ट इंटरप्रिटेशन काम तळ कोर्ट रो नु है इंटरप्रिटेशन काम होछि कॉन्स्टिट्यूशन रो हाई कोर्ट होछि बेयर मिनिमम आ सुप्रीम कोर्ट तो तारो सेटा काम करियो सो correct hoji 1 2 1 3 done next hoji question 50 india re judicial review kon imply kuch the power of judiciary to pronounce upon constitutionality of law and executive order yes bhalo eta ote statement achi eta amara kichi incorrect bi no hai seita hi judicial review eti the power of judiciary to question the wisdom of the law enacted the power of judiciary to review all legislative enactment before they are assented by the president सब जिनस को review थोड़ी करे जोटा ultra wires to the fundamental rights से गुड़ा कोई ठीक करे the power of judiciary to review its own judgment given earlier similar to different cases सेटा थारो संशोधन रो पावर ना कि judicial review रो पावर judicial review mainly executive आउ लॉ लेजिस्लेचर
constitutionality को check करिया पे ठीक है. So A is most appropriate. Then हमें देखिए question number 51. 51 को जी with reference to the judges of the High Court, consider the following statement. Any question regarding age of the judge is to be decided by the president. Okay, it is correct. Article 217 ro clause 3 रे ए जिनसो मेंशन अछि president ही हबो with consultation with the chief justice, but exactly ए article टा मन रखिया कि सेमते necessity नाही. बस एज रिलेटेड हाई कोर्ट रो एज रिलेटेड जहाँ भी डिस्प्यूट से का कि इश्यू से का आसीबो सेटा प्रेसिडेंट एटी डिसाइड करिवो. एटा में वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई कोर्ट. फाइन. तापर अछि दे होल्ड ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स. ओके, हाई कोर्ट रो जज माने होल्ड ऑफिस कर परिबो अंटिल द एज ऑफ 62 ईयर. एटा 65 टा सुप्रीम कोर्ट रो जज पई वैलिड. क्लियर? The Constitution does not mention anything about the transfer of High Court judges. Constitution article amara 222 रे mention करूची about the transfer of the judges. किए करे ए जिनसटा amara President of India करे by consulting Chief Justice of India. Incorrect, incorrect, correct. How many above statement are correct? Only one is correct. 52 देखिवा. Which of the following statement regarding Grama Nyalaya is or are correct? Fine. Gram Nyalayas are established for speedy or accessible justice in the village level. Correct. The presiding officer of the Gram Nyalaya को कौन दे न्यायाधिकारी और सेटा गुटे appointed by President of India नहीं, appointed by state government. State government को appoint करंती in consultation with the High Court. Okay. Incorrect. ग्राम न्यायालय have both civil और criminal jurisdiction. Generally से माने civil jurisdiction रे hold करो, but तांको पाखरे petty criminal offences सेटा भी बहुत माने छोटो amount रे criminal चोरी चाकरी एमतिया सब criminal jurisdiction तांको पाखरे दी थाए. Appeal against the judgment of ग्राम न्यायालय in criminal cases lie to the district or session court. Yes, correct. 1, 3 and 4 is correct. 1, 3 and 4 only. Then asiva about the 53. Which of the following statement regarding the NALSA are correct? NALSA constitute हेतला Legal Service Authority Act 1987 रे correct जिनसो. Chief Justice of India is the ex officio chairman of NALSA. एटा भी correct जिनसो. ता सहित second senior most judge होची executive chairman of NALSA. Chief Justice होची ex officio, executive chairman होची second senior judge. NALSA provide free legal aid to economical weaker section, marginalized group. Yes. NALSA is an executive body under the Ministry of Law of Justice. No. NALSA Act astala na Legal Service Authority Act re astala. So it is not an executive body. It is a statutory body. Obviously, Ministry of Law of Justice under काम करछि, but still it is a statutory body. So 1, 2, 3 इटा एटी 1, 2, 1, 3 only हबो because 4 is incorrect. 54. Consider the following statement regarding the oath taken by CAG before assuming the office. Fine. CAG swear to bear the truth, alliance of the Constitution of India. Yes. एटा देखो सबुथरे common. कोडी ओडा अखडवा लागिले ए क्वेश्चन टा मारियो. CAG affirm to sovereignty of integrity of India. Yes. CAG placed to perform duties of his impartially without fear, ill will, best ability, knowledge, undertakes uphold the Constitution law. सब गुडा एटी ठीक अछि. All of the above देखो 1, 2, 3, 4. 55. The first country to allow voting rights for all group of people was अच्छा US से तो segmentation ही किया सला आगो white तापरे ये तापरे ये रशिया रे भी voting एठी नथिला इंडिया रे all age group को voting universal suffrage नथिला काइना ब्रिटिशर्स माने जो माने legal land holding से माने ही थिला. न्यूजीलैंड होची गोटे कंट्री जो थरा all voting मूलरू तांकर आसला स्पेशली वुमेन पई से माने मूलरू ही तांकर एटी ऑन थिला. ओके, हाउ एग्जैक्ट डेट जदी कहबो केबेटो एटा हला 1893 रु एटू स्टार्ट हेगलानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज इन द न्यूजीलैंड. 56. व्हाट इज करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ जिला पंचायत ऑफ शेड्यूल्ड एरिया? तो एटा को टॉपिक रो आछी, एटा हमरा आछी पेशा हला पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज.
तो पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरियाज रो प्रोविजन कोन कि लोकल गवर्नेंस टा शेड्यूल एरियाज रे नहीं कि आसीबे हेले कोन हबो यांको पाखरा ऑटोनोमस डिसीजन टिके आसीबो ऑटोनॉमी टिके आसीबो क्लियर ऑटोनॉमी माने कोन प्लान माइनर वाटर बॉडी कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस सोशल सेक्टर रे यस पंचायत पाखे रहइबो टू एक्सरसाइज अदर फंक्शन जोगड़ा एटी स्टेट गवर्नमेंट देथिबे से विषय भी एठी रहइबो ओके सो एइडा ही तो पेशा रो ऑब्जेक्टिव थिला ना पेशा आसिला कोटू मन रख भूरिया कमिटी रो रिकमेंडेशन हला ए कमिटी गुडा स्पेशली पंचायत राज की पीआरआईस इंस्टीट्यूशंस ता रिलेटेड तारो कमिटी तापरे तारो कॉन्सेप्शन तापरे तारो क्रोनोलॉजी कोटा केतळे कोन हला एगुडा सब इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग are known as pressure group trade union yes caste group yes tribal organization yes all of the above samaste what a significant example of pressure groups किया जे सरकार ऊपर प्रेशर पकाए पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करे ओके नेक्स्ट होची 58 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिलीज करची ड्राफ्ट रूल फॉर डिजिटल भारत निधि अच्छा डिजिटल भारत निधि रिसेंटली न्यूज रे थिला एटा यूसफ को कोन करबो रिप्लेस कर दबो हला यूसफ कोन थिला सर्विस ऑब्लिगेशन फंड थिला जति सब ग्रॉस रेवेन्यू कमाउथले तार किछि पार्टटा एठी से माने इंफ्रास्ट्रक्चर रे इन्वेस्ट करिवे माने इट्स लाइक 5% इन्वेस्ट करिवे रूरल एरिया रे कम्युनिकेशन बढ़िया पे तो ए सब जिंस नाही एबे नुआ होची जो भारत निधि जो येटा सेटा यूसफ को रिप्लेस करी 59 a current affair influenced question in administration of state secretariat all messages going to the cabinet are required to be sent through whom state secretariat माने कोन सीएम रहिला तार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहिले ना तांकु करिया पे जो ब्यूरोक्रेसी ता जो विंग ता एठी अछि सीएमओ भी रहिबो तो व्हाटएवर ए स्टेट रो सेक्रेटेरिएट जो ब्यूरोक्रेट जो से विषय कहूची तो कैबिनेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड थ्रू होम कैबिनेट होची सीएम प्लस तारो हाईली सिलेक्टिव माने इंपोर्टेंट पोर्टफोलियोस सेटा होची कैबिनेट माने द हाईएस्ट माने सबटू माने लिथल एग्जीक्यूटिव बॉडी तमे कहबो लिथल इन द सेंस सबटू माने हाई लेवल रो तो ता पे दरकार सेक्रेटरी भी टॉप देखो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी से डिपार्टमेंट रिलेटेड पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे ये डेप्यूटी सेक्रेटरी डेप्यूटी अच्छे माने जूनियर एडिशनल सेक्रेटरी से असिस्ट करे से मेन पोजीशन हुए चीफ सेक्रेटरी होची एठी मेनली सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट जे ए सब जिंस करे हला तो कैबिनेट गोटे यार कैबिनेट को एड्रेस करियो माने चीफ सेक्रेटरी थ्रू टू एठी जीवो तापरे रिसर्च ऑफ विंग इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रे आईबी थिला रॉ टा आईबी रो अलगा करा हला रॉ इज एन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होची इंटरनल इंटेलिजेंस तो रॉ टा डायरेक्टली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट रो अंडर रे आछी और डायरेक्टली से पीएम को भी रिपोर्ट को हला 61 which of the following is not a department under Ministry of Human Resource Development जोटा now Ministry of Education एटी हे जाइछि अच्छा बेसिक एजुकेशन लिटरेसी ऑब्वियसली एजुकेशन भी थिबो सेकेंडरी एजुकेशन विथ टेक्निकल एजुकेशन सब एचआरडी आउ एबेकार एजुकेशन मिनिस्ट्री ऊपर अछि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यार गोटा सेपरेट डिपार्टमेंट अछि ये आउ एचआरडी मिनिस्ट्री अंडर रे एठी नाही ओके 62 Which sequence of the following term is correct in the Indian Constitution term of the order of precedence? Constitution रे कोठी भी तमे देखिबोनी order of precedence ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एटा जस्ट सेरेमोनियल पोजीशन सेरेमोनियल तांको फंक्शन आ ये सही बेसिस रे नै जस्ट गोटा हायरार्की जदी ये हबो कि का आगे आछे सेटा order of precedence सबटु ता आगा से प्रेसिडेंट ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तळे अछि चीफ इलेक्शन कमिशन चीफ मिनिस्टर गवर्नर ऑफ स्टेट ओके गवर्नर ऑफ स्टेट होछि प्रेसिडेंट रो पुओ माने गवर्नर आसियो सबटो आके तो एटी प्रेसिडेंट रो आ पीएम रो सेटा नाही माने गवर्नर जेंस अछि गवर्नर सबटो आगे आसियो हला तापरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
गवर्नर पर सीजीआई एटी आसे सीजीआई पर सीएम एग्जीक्यूटिव सीएम से माने आसो तापर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर एटा रहबो करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस गवर्नर सीजीआई चीफ मिनिस्टर सीईसी गवर्नर सीजीआई चीफ मिनिस्टर सीईसी ओके बी करेक्ट आंसर वुड बी एटी बी है ओके मु एटी गोटे पेस्ट करछि गोटे येटा सेटा खाली जस्ट गो थ्रू कर दा विकिपीडिया रो कॉपी पेस्ट देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस रे आसीबो फर्स्ट महामहिम तापर वाइस प्रेसिडेंट ओके तापर प्राइम मिनिस्टर तापर गवर्नर तापर लिविंग फॉर्मर प्रेसिडेंट तापर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तापर जाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सेमती पोजीशन नाही माने इन द सेंस एटा जस्ट गोटे पॉलिटिकल गैमिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जाकी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन ऑब्वियसली कैबिनेट स्पीकर तळे ही रही कना से माने भी यस सर स्पीकर रो आदेश मानंती यार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इट इज ब्यूरोक्रेसी नेशनल सिक्योरिटी एनएसए अजित डोभाल तापरे चीफ मिनिस्टर्स तापरे वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग लिविंग फॉर्मर पीएम्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा है तो एगुड़ा हूँ आम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस तापर जाके आसुची भारत रत्न तापर सिविलियन एक पड़े एम्बेसडर गवर्नर्स व्हेन आउटसाइड रेस्पेक्टिव स्टेट चीफ मिनिस्टर्स ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एटा मन रहा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर ओके फॉर्मर प्रेसिडेंट गवर्नर पर तापर आसला डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लोकसभा स्पीकर कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर तापर एनएसए आसीगले चीफ मिनिस्टर एठी आसले देखो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम तापर जाय कि सीएम चीफ मिनिस्टर्स आसुछन्ते ओके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की है सीनियर मोस्ट गोटे ब्यूरोक्रेट से ओके दिस इज इट व्हाट डज द व्हील ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग सिंबलाइज धर्म चक्र 24 स्पोक डिनोटिंग 24 आवर्स justice fine which of the following statement is correct regarding the national panchang national calendar of India Indian national calendar is based on Vikram Samvat no hai Indian national calendar hoji Sak calendar Sak hala the national calendar has been adopted with effect from 26th January national calendar ta eti 22nd March रे 50 रे बिन में 2 वर्ष पर 1957 रे ठी हितला ओके आ तार प्रमुख माने फर्स्ट मास चैत्र ओके so incorrect one neither one nor two is correct 65 which of the following is incorrect related to the provisions of RPA ROPA 1951 the ROPA 1951 is more concerned with the जो माने candidates right high court of particular अच्छा incorrect पचार ना high court of particular state original jurisdictions अच्छी तरह electoral dispute को yes correct जिनसा Election Commission of India is empowered to register political party. Yes, candidate can contest from more than 2 constituency. नहीं, दुईटा maximum दुईटा constituency. That incorrect पर चाहे तो incorrect होगा. Then असला हमारा which of the following statement correctly describe कोची first past the post electoral system in India. Candidate secure ना जिये जितला से पार हला. Candidate majority of vote in entire country. No, candidate who secure highest number of vote in its constituency. Yes. तो मु जदि एठी भोट पाइबी 6% मो कॉन्स्टिट्यूएंसी रे मु काल जदि ठिया होबी आउ जणे पाइबे 4% आउ जणे पाइबे 2% आउ बाकी आमे एते सुंदर नेता गडा जे आउ के भोट ही देलेनी नोटा सब तो व्हाटएवर नोटा भोट तो काउंट हबनी एठी 4 2 6 जो एरा 12 बाकी रेस्ट जति की थिबो सेडा नोटा रे भी जाऊ बट स्टिल फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम रे ये होची विनर एठी हला 67 which of the following statement regarding the proportional representation correct okay Rajya Sabha voting
It aims to allocate seat in the legislature in proportion to the vote received by each party. Correct answer. Proportional representation. It ensured that only the winning candidate in each constituency get elected. It is used in election of the president and Rajya Sabha in India. Correct. It is more like to reflect minority interest than the fast vote system. Yes, correct. Kana sethi ji jitla tar hobo ethi proportional representation. Tahale correct kono 67 ro 134 option B. Next ame jiba to complete phase of the Indian election was the complete phase of the Indian election change itla strict implementation of the following model code of conduct bisare pachach. Ban on putting poster, wall painting on the wall जमा नहीं चारियाडे तो आमर चित्र हो जाइछि. Ban on pre-election opinion poll और exit poll. Yes, election पूर्वरु गोटे माने जो ये करगी गोदी मीडिया जेमती पूरा हवा करछि ये एंती कर दो सेंती कर दो. Exit poll, opinion poll, pre-election रु ban अछि हला. Post election जा होछि. The use of loudspeaker during poll campaigns are prohibited. No. Use of government machinery जो तो इंदिरा गांधी घेरैतले. Yes, this is prohibited. तो आमर 2 आउ 4 होछि करेक्ट. हैला 69. Which of the following is a constitutional principle for election in India? Election to the parliament and state legislature is based on proportional representation. Na. Legislature to the state first past the post. Parliamentary election the प्रकार रा हुए. Proportional representation भी first past the post system भी. हैला. The election is based on the power to make law relating to all matter in connection with election only with the legislature of the state. Okay. No person shall be excluded from the electoral roll on the ground only of religion. This is correct. 70. ROPA 1950 deals with which of the following matter? Preparation, revision of electoral roll, issue of electoral identity card to the registered voter, preparing electoral roll with photograph of voter counting, vote during election, celebration of voters day. Sabu 70 ro all 5 of correct. D. 70 asla the ROPA of 1950 deals with which of the following matter? ROPA hochi related to the election, preparation, revision of electoral rolls, issue of electoral identity card to registered voter, preparing electoral roll with photograph of the voter. Yes, EIC number soito, counting vote during election, election commission rakama. Celebration of National Voters Day is C. 1, 2 out 3 is correct. 71. With reference to Indian polity, consider the following statement. Okay. Currently, political party can receive fund from foreign company. Yes. Right to receive is fundamental right. Nahi. Supreme Court मना करछि एटा fundamental right नुहे आ ए जिंस highly regulated हेई परिबो FRCA. तो statement 1 correct, statement 2 incorrect. Okay, see how. 72. Which of the following is or are the exception regarding the disqualification of the ground of defection? Party drohi. The member are not disqualified when 1/3 of the member आउ कासा merge हबो. देखो आगुरु एटा नथिला but change परे 2/3 merge हेले माने एटा डिस्क्वालिफाई हबो नाही हैला एक्सेप्टेबल. बट 1/3 हे गेले से 1/3 जाको डिस्क्वालिफाई हे. Okay, member is not disqualified when vote करे contrary to the direction. जब माने disqualify हे जिवो एटी. Member does not get disqualified जतोळे से elected हुए presiding officer और से voluntarily निज membership गोटे पार्टी रो गिव अप करती है. हां एटा करेक्ट आंसर. How many above are correct? Only one correct. 3 नंबर टा. How many पचाचे ना which पचा नहीं तो only one correct. Okay. Then 73, consider the following statement with reference to the star campaigner in the election in India. Election Commission has the power to revoke the status of star campaigner of a party. Star campaigner टा mainly political party decide करती किए revoke करियो न करियो सेगला तांको internal matter. Election Commissioner रो तारो सेथर किछि नाही. हां बाकी ताको लिस्ट खाली दबार अछि. As per the revised guideline, the list of the star campaigner has to be communicated to the returning officer, nahi to the election commissioner. How said abhi chief
election officer जोटा को हमें कहूँ electoral officer within 5 days 7 days actually 5 days नुहे from the date of yeah तो 7 day ଆଉ कोविड बेला एटा 10 दिन जाके भी एक्सटेंड हेतला ताको दबार अछि election notification पर which of the statement given above is correct neither one nor two data को एठी incorrect रहउछ okay 74 with respect to the voting rights in India who among the following can vote through electronically transmitted portal ballot paper अच्छा जी आर्म फोर्स रे अछंती जी सरकारी रे बाहर साइड रे अछंती तांको ए सब दिन पोस्टल वोट एठी बैलेट अलाउ अछि एनआरआईस आसी कि सेवन कास्ट करिया तो 74 रो 1 and 2 only then we have 75 match the list 1 with the list 2 okay पंचायत राज कमिटी आउता ईयर विषय अछि तो पंचायत राज कमिटी रे फर्स्ट तो आसला हमर कोन अशोक मेहता कमिटी 1978 रे आसला कोइला 2 टायर पंचायत राज एठी हो तो अशोक मेहता 1978 मार्क करो C is 4 C4 एडिटर अछि फाइन देन हनुमंता राव एठी आसला हनुमंता राव 1984 रे बेसिकली एमाने कोन करले एठी रिकमेंडेशन कोन करले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो जिनसोटा ताकू स्ट्रांग करिया रे हनुमंता राव 84 तापर जीवीके राव मेनली ता ना रही जणा पड़ती जीवन हला से कहले रिवाइटलाइज रिलीफ करा जो रिवाइटलाइज करा जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी तांको एठी दिया जो तापर एलएम सिंघवी इज द लेटेस्ट वन 86 पर वर्ष 1986 तो एलएन सिंघवी रे रिकमेंडेशन आस्तला जे पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दिया जाऊ ता पर ही हला 73rd अमेंडमेंट है कि ताको पछरे ऐड करा ठीक अछि अशोक मेहता 2 अशोक माने हमरो सीटा जदी 4 ही हबो सीटा 4 हेले फाइन तापर हनुमंत याटा एठी हमरो फुट रहउछि एठी 3 तो एटा 3 कोटा एटा option D is the correct one okay 76 next question kohuji consider the following function of the state election commission and select the correct answer using the codes given below ठीक अछि कोन हमरो prepare the electoral roll for panchayat or municipal election in the state yes state election commission रो सेटा ही तो काम municipality और पंचायत रो election conduct का करैबो डन आउ एटा कोठी मेंशन अछि ए जिंस पाइबो तमे आर्टिकल 243 तापर अल्फाबेटिकली सब जिंस एटा मन रखिबार माने बेसिक रिक्वायरमेंट अछि क्लियर तो ए जिंस तुमको मिलिबो 243 हमरो के रे क्लियर कंडक्ट इलेक्शन फॉर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी ऑफ द स्टेट एटा भी करेक्ट जिंस ए जिंस हमरो 243 रो ZA म्युनिसिपैलिटी ऑफ द स्टेट फाइन तो मिल जिवो एटा conduct election of other body in addition to panchayat municipality according to direction given by governor yanko kon direction dabo prepare the electoral roll and conduct election as assigned by election commission of india ei सब जिंस तांकर न तांकर केवल ए दिटा होची जिंस तो करेक्ट कोड कोन सेटा हमको देखियार अछि करेक्ट कोड होची हमरो 76 रो आसीला 1 2 जति 1 and 2 ओके देन होची हमरो 77 क्वेश्चन को होची which of the following are constitutional authorities fine माने constitutional bodies हमें सेडा को कहि परिया state election commission yes state finance commission okay district panchayat constitution रो तो state electoral officer सेडा constitution ये नो select the correct answer 1 2 and 3 then next हमरा असला 78 which of the following has been provided in the 74th Amendment Act of 1992 okay municipal committees अच्छा कोटा अच्छी municipal committees बोली सेमती किछि नाही हमरो अच्छी municipal border municipal corporation अच्छी municipal council अच्छी फाइन तापरे हमरो एपडे नगर पंचायत अच्छी आउ किछि नाही एटा नाही वार्ड कमिटी अच्छी वार्ड कमिटी को थरे अच्छी 243 रो S रे तमे देखियो वार्ड कमिटी विषय लिखा है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी मेट्रोपॉलिटी अच्छा 243 एस गला मेट्रोपॉलिटी जतले भी मेट्रोपॉलिटी Z क्लास पळे आसियो माइंड को Z आस जीवा कथा 243 Z रो एलाइट क्लास मेट्रोपॉलिटी एबे मन रखियो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी 243 रो Z रो D
कहीं Z कहीं D नुहे कना Z म्युनिसिपालिटी एका सब सेपटर आसे ओके तो एटा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी मेंशन अछि हमर तो 2 3 4 मेंशन अछि ओके सो 2 3 4 दिस वन इज द करेक्ट आंसर 79 रो तापर हमें देखिबा what is correct about the tenure of municipal council okay municipal council is counted from the date declaration of electoral result नहीं जो दिन प्रथम मीटिंग हुए म्युनिसिपल काउंसिल रो सेही दिन टू फर्स्ट काउंट तक करा जाए तो एटा इनकरेक्ट tenure of municipal counted from the day of first meeting एटा होचे करेक्ट आंसर tenure of municipal council is 5 years okay the municipal council dissolve in 2 years then a new municipal council will be organized for 3 years नहीं एमिति हुए नाही जदी गोटे municipal council हेची सेटा dissolve हे गला तार टर्म कंप्लीट करिया पूर्वरु आउ गोटे जदी आसला ताकू फुल टर्म एठी मिलिबो बच्चा कुचा टर्म एठी मिलिबो नाही if municipal council dissolve 2 years full 5 years okay एटा करेक्ट so 2 3 5 करेक्ट 2 3 5 करेक्ट हला अच्छा एटा ई अछि ई तम क्वेश्चन नथिबो डायरेक्ट हे जो mistakes 80 the state government exercise control over urban local body in केमिति state government urban local body ऊपर कंट्रोल आडिबो पैसा फर्स्ट होची legislative matter state legislative कर परिबो तापरे financial matter personal matter okay personnel नु है personnel माने जो माने चाकरी करंती माने वर्कर्स सेक्रेटरी सचिव टू नहीं सब जिनस सेटा स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट कर परियो काहा को हायरिंग करिवो रिक्रुटमेंट एठी करिवो कर परियो सिटीजन ग्रीवांस स्टेट गवर्नमेंट रो ग्रीवांस ऊपर किछि सेमते नथे सिटीजन ग्रीवांस यूजुअली जो माने वार्ड मेंबर थांती कि लोकलाइट्स माने थांते से माने कि ग्रीवांस रिड्रेसल पोर्टल रे एजेंट्स होडा हुए सो ए बी सी तीनटा होचे करेक्ट ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट सो ए बी सी तीनटा टी करेक्ट ऑप्शन नंबर डी 81 jiba in the area covered under Panchayat extension to the Schedule Area Act PESA what is the role of Gram Sabha ethi okay तो PESA Act रे Gram Sabha role कोन है Gram Sabha power stop transfer land in schedule area yes power अछि ownership of minor forest produce Gram Sabha पाखरे अछि recommendation of Gram Sabha require होछि prospecting license mineral पई yes तीनटा को एठी करेक्ट Gram Sabha रो autonomy power एठी अछि हला 1 2 3 1 2 1 3 done then amara asla 82 who among the following can be removed only in manner prescribed by the for the removal of the Supreme Court judge okay chief election commissioner yes ताकू पूरा एटा अछि CEC member जन ना गुटिए तापर इलेक्शन कमिश्नर दीटा एटा होछि ट्रिपल मेंबर बॉडी आगरो सिंगल मेंबर थिला लास्ट ईयर एथ्रो भी क्वेश्चन आसी थिला हला जति सब कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अछि सेर केमिति उद्भावना हला केबे कोन हला से जिंस तमे एडी मन रखि दबो हला एगुडा हमर नोट्स रे जो फुल कोर्स जो माने नै जो त नोट्स रे भी पाई जिवो जो माने केवल टेस्ट सीरीज ये करछो गोटे काम करियो जते भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अछि सिंपली विकिपीडिया रु ही आसुची हे माने भी डायरेक्ट टेक्स्ट उठी पकैथिले लास्ट क्वेश्चन रे त गोटे काम करिवो से विकिपीडिया रु तोटे कंपाइलेशन कर दो तार हिस्ट्री एवोल्यूशन दैट्स इट काम कोन मेंबर केते एवोल्यूशन दैट्स इट सती रिसेंट रे जदी किछि अपॉइंटमेंट से का हे जे सेटा भी देखि दो बट सब नेसेसरी नुहे केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो अपॉइंटमेंट्स ता देखि जो सीएजी यस चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी यस अटॉर्नी जनरल ना ये तो प्राइवेट मेंबर भाई यार किछि माने प्राइवेट लोक यस वकील तो दैट्स इट है 1 2 and 3 1 2 and 3 83 which of the following statement about the president or veto power is correct president can use suspensive veto against money bill no money bill तो prior approval रे आसे suspensive veto हबो कोन assent दबो president has no authority to withhold assent to constitutional amendment bill yes किछ authority नाही जदी पास हैला माने ताको साइन करियो पड़िबो अच्छा एटा करेक्ट स्टेटमेंट हां ना कइडे बोले जो नो अथॉरिटी ना हां अथॉरिटी नाही तार पॉकेट विथ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नाही पॉकेट विषय भेटो विषय सेटा कन्वेंशनल पावर सेम तो रखि दोथले विदाउट टाइम बाउंड तो कोड रे करेक्ट कोन 2 ओनली इज करेक्ट बाकी सब इनकरेक्ट देन वी हैव 84 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट
Governor can reserve a bill for consideration of the president. 200 Governor appoint the advocate general of the state. Fine, ठीक होचे. Governor is elected by electoral college. No, incorrect. Electoral college governor पे हुए नहीं. से pleasure of the president rate यहाँ से. एक के दो correct जिनसा 1 and 2 only correct. 85. Which of the following correctly describe करे feature of the distribution of legislative power between the union और state? Legislative power. Okay, residuary subject lie with the union list. Correct. जहाँ बोलिला union रोची. Union parliament legislate कर परियो की state list रे during national emergency. Yes. Constitution equal power दोची union और state को ना. Concurrent list को union इटे dominant रोची equal power इटे दो नहीं. तो कोटा correct 1 and 2 is correct. 86. Which of the following provision help ensure करे independence of the judiciary in India? Okay भाई, judges supreme को remove only through impeachment by the parliament. Correct. Salary allowances consolidated fund of India रो आसे तो तंकरो डर न था है. Judges are appointed from panel where prime minister's office नहीं. Judges collegium system रे होती. तो 1 and 2 हो जाती correct जंसो. 87. With reference to the 73rd constitutional amendment, consider करो following statement. ये direct elections to all 3 level of पंचायत राज institutions नहीं किया से नहीं. ग्राम सभा के Gram Sabha is recognized as foundational body. Correct. State election is conducting election to the panchayat. Very correct. So 2 and 3 is correct. 88. Which of the following statement regarding the Attorney General of India is correct? He is the highest law officer of the country. He has right to participate proceeding of both house. He must be sitting judge of the Supreme Court. No. Say what I would say advocate. 1 and 2 only correct. Okay. 89. Consider the following statement regarding the Council of Minister. The total number of minister including Prime Minister cannot exceed 15. Yes. Prime Minister appointed by the President without any constitutional obligation on your party. Yes, correct. Council of Minister is collectively responsible to the Parliament. Parliament, not to the President. Parliament in the sense to the Lok Sabha. Lok Sabha. Incorrect. 1 correct, 2 correct, 1 and 2 is only correct. 90. Next, देखिए हमें question number 90. Which of the following statement about the interstate council are true? It is a constitutional body created under Article 263. This is correct. या recommendation देइछि binding. नहीं binding नो है. Challenge करा जाए परियो. Prime Minister होछि तार chairman. देखो interstate council mainly हमरो discussion रो गोटे forum panel. Tribunal जदि हबो tribunal award सेटा binding लगी पारे. Okay, but council is a panel of discussion. It is a platform of discussion. So this is incorrect. 1 out 3. Correct. 91. Which of the following correctly describe power of the Supreme Court under its original jurisdiction? Acha. Between government of India, more state, yes, power achi. Dispute between 2 or more state, election dispute involving member of parliament, ei sab jinsa hochi ama high court ro kamo. Interstate water dispute, yes. 1, 2 and 4. Acha, interstate water dispute is original jurisdiction no hai. Interstate water dispute hochi tribunal dwara. So 1 and 2 only correct. Hala. So 1 and 2 only. Then we have 92. Which of the following provision ensure the independence of High Court Judiciary? Salary, CFS ru consolidated fund of the state ru 92. Judges are appointed by the governor. Na. Removal is same as the Supreme Court judges. Security of tenure is guaranteed by the Constitution. Okay. So amaro 1, 3 or 4. 1, 3 and 4. Then हमें देखिए 93. Which of the following statement about the model code of conduct correct? এটা legally enforceable देइছে legally नो है agents election commission द्वारा एठी आछे guidelines legal enforced by election commission during election yes अच्छा या रोपा को जदी भांगिबो पेनल्टी एका सो लागि पारे बट एटा legally binding नो है ए रोपा को MCC comes into effect from date of announcement of election scheduled by the election commission. Okay, so 93 आमे देखिबा एडी 2 ठीक अछि 3 ठीक अछि हला 2 and 3 only. 94. Which of the following are features of quasi federal structure of India? Single constitution, okay. Dual citizenship nahi. Unequal representation of the state in Rajya Sabha, yes. All India services, yes. 1, 3 or 4. 1, 3 or 4.
माने कंप्लीटली फेडरल नुहे बोली एटा कहूची हो 95 consider the following statement regarding Jilla Parishad. It is directly elected by the people. No. 95 it coordinate the activity of Panchayat Samiti within the district. It relieve fund from the state government. Yes, correct. Amara 2 out 3 are only correct. 2 and 3 correct. 96 which of the following statement is true regarding the power of the parliament in the concurrent list? Okay, in case of conflict state law prevails. No, parliament override कर परिबो state law concurrent list रे गोटे लेटर law करिकी. Yes, state law prevail करिबो if receive presidential assent. That is also correct. Okay, so जदि president action दबो माने गोटे देखो टॉपिक थिबो एजुकेशन उपरे सेतरे स्टेट भी लॉ बनै थिबो सेही सेम जगह रे एठी पार्लियामेंट भी लॉ बनैबो. नाउ स्टेट जदि स्पेशल रिक्वेस्ट करे कि देखो महिम एटा हमल राज्य पय एटा बेनिफिट हबो पार्लियामेंट एमती लॉ बनै दिछ बट हमर टिके कस्टमाइज्ड मॉडिफाइड वर्जन अछि एटा को असेंट दिया जाओ. तो प्रेसिडेंट जदि एथर सहमति हबो एटा प्रिवेल करिवो इंस्टेड ऑफ दिस. 97 which of the following statement regarding the state election commission is correct? Okay, SEC पंचायत म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन कराए. Chief Election Commission of state election is appointed by the president. No. State election commission has the power to cancel, postpone election, violence or malpractice. Fine, this is correct. 1 out 3 is correct. Generally governor ko 98 which of the following are true regarding the Election Commission of India? It is a multi-member body. Yes. Ready, article 324 achi. The chief election enjoys security equivalent to Supreme Court judge. President can remove on recommendation. हाँ देखो एमती जो प्रोविजन टा अच्छे केवल ये चीफ इलेक्शन कमिशन ही सुप्रीम कोर्ट जज बढ़िया इट सिक्योरिटी ये करे. आउ दुटा जो अच्छी ये जाकि जदि प्रेसिडेंट को कहि देला प्रेसिडेंट या को बाहर कर पारिबो हला. ओके 98 रो हमें देखिबा 1 2 1 3 clear. 99 consider the following statement with respect to the Central Information Commission CIC. This is also a constitutional non-constitutional body पढ़िबो. CIC is a constitutional body नुहे. Chief Information Commissioner is appointed by the President on recommendation of committee including Pradhan Mantri. CIC empowered to receive complaint under RTI 2005 हैला. तो 2 out 3 एठी करेक्ट आंसर बाकी इनकरेक्ट. So which of the following body are classified as non-constitutional? Okay, National Human Rights Commission eta constitutional statutory. Central CBCB statutory. National Commission for Women eta भी statutory. Finance Commission that constitution mention अछि, hence that is constitutional. It is not पचारछि ना not constitutional तो 1 2 1 3 दो एठी. Okay, 1 2 1 3 clear. So by this आमे ए टेस्ट सीरीज रो सेकंड जिंसटा कोटी अटेम्प्ट करलु. कोटी भूल होउची काहे की भूल होउची सेटा तमे एनालिसिस एठी कर हला. आ यार नोट्स भी दिया है भलो वैल्यू एडिशन से का है एई चैप्टर्स कोडा यूजुअली नेग्लेक्टेड थाए बट एई चैप्टर टू रिसेंट ट्रेंड रे एठी भलो अमाउंट ऑफ एठी क्वेश्चन भी तुमको देखिया को मिलुछ. ओके, सो नोट्स संगे टैली करो जोठी चाह न होउछ गोटे शॉर्ट नोट्स बनै कि से केवल से पॉइंट जोडा तुम मन रहउनी से गोडा ये कर दियो. क्विक रिवीजन पे बहुत एसेंशियल हो हला. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.